Good morning, students. This is part 1 of alcohol, phenol and ethers. So starting from the classification, so alcohols are classified as mono, di, tri or polyhydric alcohols. Fine. So you can see this is the monohydric alcohol which has only one OH, dihydric 2 OH, trihydric 3 OH. So it will be classified as mono, di, tri or polyhydric compounds depending on whether they contain 1, 2, 3 or many hydroxyl groups respectively in their structure as given below. And monohydric alcohols may be further classified according to the hybridization of the carbon atom to which the hydroxyl group is attached. तो monohydric alcohol further हम classify करेंगे on the basis of hybridization of carbon, whether it is sp3, it is sp2 or the sp. Now the next is the compounds containing sp3OH bond. If the carbon is sp3 to which OH is attached, then the compounds will be what? In this class of alcohols, the OH group is attached to an sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, and they are further classified as follows: the primary, secondary and the tertiary alcohol. तो जो आपके alcohols हैं जहाँ carbon is sp3 hybridized and OH is attached to that, तो in that case you have again further classification like primary, secondary and the tertiary alcohol. In these three types of alcohols, the OH group is attached to primary, secondary and the tertiary carbon respectively as depicted below. Now you can see this carbon is primary carbon. If carbon is attached to one carbon chain, or if it is have two hydrogens, that means it is primary hydrocarbon. And if it is having one hydrogen or the two carbon branches, it is secondary. And if it is having no hydrogen or three carbon branching, it will be tertiary. So you can see here, this is the primary alcohol, secondary and the tertiary alcohol. Now next is the allylic alcohol. Now see, in the allylic alcohol, obviously carbon is sp3 hybridized, but that sp3 hybridized carbon is further attached to the sp2 hybridized carbon. So OH is attached to the allyl carbon, that is why it is an allylic alcohol. So you can say this carbon is sp3, but this sp3 is again attached to the sp2. So sp3 carbon which is attached to the sp2 is known as the allylic carbon. So this allylic carbon has OH group. This will be the allylic alcohol. Further you can see in allylic also there are further secondary, tertiary, primary alcohols. So this is the primary. It has two hydrogens. If it is having one hydrogen and one carbon branching, secondary. If it is having two carbon branching and one OH, this will be the tertiary. Now next is the benzylic alcohol. Again, if benzyl group is there and OH is attached, that will be the benzylic alcohol. In benzylic also it is just like the allylic. In allylic it is attached to carbon-carbon double bond, but in the benzylic it is attached to the benzene ring. But the hybridization in both the compound is same. Means the sp3 carbon is attached to the sp2 hybridized carbon. Here in the benzylic case also you can see this is sp3 attached to the sp2 carbon. Fine. So this will be the again primary benzylic alcohol. This is the secondary benzylic alcohol and this will be the tertiary benzylic alcohol. Now the compounds containing sp2 hybridized OH bond. So these alcohols contain OH group bonded to a carbon-carbon double bond. अब यहाँ पे OH जो है अल्कोहल जो है OH बेसिकली किससे अटैच है? कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है. दैट इज टू अ विनाइलिक कार्बन or to an aryl carbon. These alcohols are known as the vinylic alcohols. So it is saying कि अगर आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है जिससे OH अटैच है तो आप देखें तो इस तरीके से OH की अटैचमेंट होगी. Complete the valency, it will be CH2 CHOH. So this will be known as the vinylic carbon, vinylic alcohol. And if it is attached to the benzene ring directly, this is the benzene ring and it is directly attached to the carbon which is double bond or the sp2 hybridized, then it is known as the aryl carbon. So now aryl carbon, the OH is attached to the aryl carbon. Fine, the name is the phenol. Now phenols, it can be mono, di and the trihydric. अब ये भी mono, di, tri हो सकता है. क्लासिफिकेशन देखें तो अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, एक OH एक CH3. यहाँ देखिए दिस विल बी अगेन मोनोहाइड्रिक. नाउ 2 OH, दिस इज अ डाइहाइड्रिक एंड 3 OH, दिस इज अगेन द ट्राइहाइड्रिक. फाइन, फिनोल्स. नाउ नेक्स्ट इज द ईथर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ईथर? ईथर्स क्या है बेटा? दो एल्काइल ग्रुप अगर ऑक्सीजन से अटैच हैं देन दिस इज नोन एज द ईथर. Now ethers are classified as simple or symmetrical if the alkyl or aryl groups attached to the oxygen atom are the same. So it is saying if suppose oxygen atom से जो R group attach है ये दोनों same हैं,
if both are same, this is R1, this is R2, is R1 is equals to R2, in that case your ether will be symmetrical. Otherwise it is mixed or unsymmetrical ether. If the two groups are different, like you can see this here, the groups are same, C2H5 OC2H5, this is symmetrical ether, whereas here you can see two different alkyl groups are there, so they are unsymmetrical ethers. Now next is the common name or the IUPAC name. This is known as the phenol. This is the phenol. Now this is orthocresol or the 2-methyl phenol. तो देखें यहाँ टॉलिन और फिनोल दोनों ही बेस कंपाउंड्स है, बट जहाँ हमें चूज़ करना पड़े मिथाइल और OH में, देन वी विल चूज द OH बिकॉज इट इज़ एन फंक्शनल ग्रुप. सो फिनोल विल बी द बेस कंपाउंड हियर, सो आंसर विल बी द 2-methyl phenol, or its common name is the orthocresol. Now secondary, it is the metacresol, it is the paracresol, or the 3-methyl phenol or the 4-methyl phenol. Dihydroxy derivative of benzene are also known as 1,2,1,3,1,4 benzene diol. Now you can see here, this is the benzene 1,2-diol, benzene 1,3-diol and benzene 1,4-diol, because here you cannot consider the phenol because both the two OH groups are present, so you cannot categorize now as a base compound here. So you have to mention benzene 1,2-diol, benzene 1,3-diol, benzene 1,4-diol, and the common name is the catechol. If two hydroxy groups are there, it will be catechol, and if two hydroxy groups are at the meta, it will be resorcinol. If it is para, it will be hydroquinone or the quinol. Now next is ethers. Common names of ethers are derived from the names of alkyl aryl groups written as separate words in the alphabetical order and adding the word ether at the end. Fine. So common name की बात कर रहा है कि हम जो भी aryl alkyl group present है, हम उनको ऐसे separate word लिखते हैं और end में हम word लगा देते हैं ether at the end. For example CH3C2H5O. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पहले हम मिथाइल लिखेंगे या इथाइल लिखेंगे, तो वी विल चूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो फ्रॉम द मिथाइल और इथाइल, इट इज़ द E which comes first in the alphabetical order, so name will be the ethyl, methyl, ether. This is the common name, this is not the IUPAC name. Fine. Now these are the compounds mentioned here. You can see this is what, this is dimethyl ether. This is the common name, but इसका IUPAC name क्या होगा? Methoxymethane. Fine, because it is like this, 3 hydrogens and 4 hydrogen is replaced by OCH3. It will be methoxy, the word will be the methoxy, and this is methane. Methoxymethane. Now next see diethyl ether. This is diethyl ether and its common name will be ethoxyethane, because here ethoxyethane will be the common name, sorry IUPAC name. Now next अगर हम देखें अनसिमेट्रिकल आ गया, तो अनसिमेट्रिकल में अब एक प्रोपाइल है और एक मिथाइल है, तो MnOP में M पहले आएगा, तो हम लिखेंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर. दिस विल बी द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम विल बी व्हाट. अब जो छोटी चेन है वो आपकी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी, तो CH3 स्मॉलर एज कम्पेयर टू द प्रोपेन, सो योर CH3 विल बी द सब्स्टिट्यूएंट. सो नेम विल बी द methoxy propane or the 1-methoxy propane. Now this next one. Now benzene ring has OCH3 group. फाइन. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब फिनाइल है, एक मिथाइल है, तो अगेन आप पहले लिखेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर. इट इज़ द कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल ईथर, और इसका कॉमन नेम एनिसॉल भी है, हम इसे एनिसॉल भी बोलते हैं. इट्स लाइक दिस, आपके बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप अटैच है, दिस इज़ द एनिसॉल. फाइन. अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो आप OCH3 को क्या चूज़ करेंगे? यू विल चूज़ इट एज अ substituent. It will be the methoxybenzene. The name will be what? The name will be methoxybenzene, और common name is the anisole. IUPAC नेम भी इसका anisole रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये बेस कंपाउंड की फॉर्म में यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट इज इथाइल फिनाइल ईथर. फाइन. अब इसका कॉमन नेम है फिनिटोल एंड IUPAC नेम होगा इथॉक्सीबेंजीन. अब नेक्स्ट देखें एक बार. अब देखिए बेटा, बेंजीन के साथ जो कार्बन चेन है ना वो 7 की है, तो अब बेंजीन में 6 है, साथ में 7 कार्बन की चेन है, तो आप 7 वाले को अब पेरेंट मानेंगे. तो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग 7th वाले को आप पेरेंट मानेंगे और बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो ये होगा आपका फिनॉक्सीहेप्टेन. दिस विल बी दी IUPAC नेम एंड कॉमन नेम विल बी व्हाट? दी हेप्टेन. और फिनाइल में कौन पहले? H पहले, क्योंकि H अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर. Now the next, this is isopropyl group and the methyl group. So I or M में you will write, sorry, you will not see the I, you will see P. For 3 carbon there is P word you will look at. So it will be methyl isopropyl ether and the common name, sorry, IUPAC name will be
अब दिस इज़ द चेन, अब आप इसे चेन की तरह कंसिडर करेंगे। रिंग चेन में 1 2 एंड 3, सो 2 पे आपका मिथॉक्सी है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। सिमिलरली द अदर 3 compounds you will do it yourself, जहाँ डाउट हो you can ask. Let me discuss the last compound which is seems to be difficult but it is not. अब देखो लास्ट कंपाउंड का कोई कॉमन नेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचिंग आ गई है, बट IUPAC नेम यू कैन राइट. So according to the IUPAC name, now what you will choose as a substituent? Obviously, this 6 carbon ring is large in carbon number. It's except the 2 carbon chain. Fine. So this will be the parent chain, and this will be the substituent. So now look at the numbering. तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर देंगे या हम मिथाइल को पहले देंगे. तो होना तो यही चाहिए कि आप फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर दें, बट इस केस में क्या हो गया, क्योंकि एक कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, तो जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो आप फंक्शनल ग्रुप छोड़ के आप अपने ऐसे कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देंगे जहाँ पे 2 आपकी क्या अटैच्ड हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स. तो इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है तो इसको पहला नंबर देंगे एंड इसको दूसरा नंबर देंगे. सो 2 इथॉक्सी 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. अगर सपोज यहाँ एक CH3 होता तो ऑब्वियसली आप इथॉक्सी को ही 1 रखते, बट क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 हैं तो इसलिए आप इस कार्बन को 1 प्रायोरिटी देंगे. So it is saying if both the alkyl groups are same, the prefix di is added before the alkyl group. For example, diethyl ether. So this is it in this video. In the next video, I will discuss the next part of this chapter: alcohol, phenol, and ethers.